So, welcome all of you. Myself Prakash Kumar. So today in this session, we will discuss about the logics of the formulas that we were talking about cylinder formulas, but we have to now relate it to cone also, right? So, like first of all, how many of you are trying questions of like volume and surface area? Means those who have not done anything of this chapter, let me know. कौन है जो मतलब उनको problem होता है? They have not even started like that. Tell me. All of you started solving. Yes, sir. Okay. So, Aditya, you have not started. Okay. So, first of all, you have to be very, है ना, two things has to be clear. आप कितने भी तेज स्टूडेंट हो, दो चीज आपको इंश्योर करना है मेंशन है. That the point is logic of the formula, है ना. फॉर्मूला अगर आप पढ़ रहे हो तो उसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि किस तरह से. If suppose in your for suppose I am telling कि if in your exam ना this one is half cylinder. Okay, this one is half cylinder. Okay, this portion is missing. I'm just giving you example. All of you know that there is cylinder, right? So abhi for suppose what I have done, this one is the full round cylinder, but what I have done, isko middle se hum cut kar diya, right? If I cut it down from the middle, है ना, इसको मिडिल से सिलेंडर को क्या कर दिया, बीच से कट कर दिया. देन आई विल आस्क की सरफेस एरिया क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, राइट? सो आपको तो पता है पायर स्क्वायर एच है, नहीं ना, उससे नहीं होगा, ठीक है ना. यू मस्ट नो. जस्ट आई एम ट्राइंग टू से इफ इन योर एग्जाम ना थोड़ा सा क्वेश्चंस को टर्न अगर कर लिया गया ना और आप सिर्फ फॉर्मूला रट करके काम कर रहे हो, देन यू विल नो. एक तो इंटरेस्ट नहीं आता होगा, ठीक है. सेकंड की आपको वहां नहीं वो चीज हिट होगा, ठीक है. जहां से आप स्कॉलरशिप एग्जाम्स यू मस्ट हैव हियर, है ना, आप बहुत सारे एंथे और क्या क्या एग्जाम्स अपियर करोगे, यू विल थिंक कि आपको वो पायर स्क्वायर्स देंगे एंड यू विल गेट दैट, है ना. आपको 10th के लेवल पे आप खुश हो सकते हो, नॉट एट दैट लेवल, ठीक है ना. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लॉजिक क्या चल रहा होता है अभी, ठीक है ना. व्हाई इट इज पाई स्क्वायर एल ओनली, कुछ लॉजिक है क्या सिलेंडर से, यू हैव टू कनेक्ट. आप जब कनेक्ट करोगे ना, इट विल बी बेटर, इट्स गुड, राइट. And moreover, second the point is calculation. I was like discussing one day कि calculation किस तरह से करना है ना. ऐसा नहीं कि फर्स्ट पॉइंट ही लिया एरिया ऑफ कोन और 3.14 और √3 का वैल्यू 1.73 मैंने पुट किया, उसके बाद वो नहीं होने वाला है. क्या कहना चाह रहे हैं अभी समझ में आएगा, ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट. ओके, सो नाउ फर्स्ट आई कम टू द सिलेंडर पॉइंट. ऑल ऑफ वी हैव डिस्कस्ड द सिलेंडर का फॉर्मूला क्यों होता है. कल ही हम लोग बात कर रहे थे अबाउट वॉल्यूम. व्हाट वाज द वॉल्यूम? पाई आर स्क्वायर है. Pi r square circle into up to the height of h. What is the lateral surface area? 2 pi r h. 2 pi r h. 2 pi r h. And why it is 2 pi r h? You know, we know this thing. We have discussed yesterday. Why it is 2 pi r into h? Because this one is actually length and this one is breadth, right? Length is 2 pi r. And what is the total surface area of cylinder? 2 pi r into h plus r. 2 pi r h. First is like curved surface area is 2 pi r h plus ऊपर भी एक सर्कल है ना, you can draw a cylinder. 2 pi r square. हाँ, ऊपर भी एक सर्कल है और बॉटम में भी एक सर्कल है. So it means curved surface area is 2 pi r h plus two circles are on the top and the bottom. So it will be pi r square. 2 pi r square because there are two circles. So if I take this one, I'm writing again 2 pi r h, that is curved surface area plus 2 pi r square, right? So what I can take common 2 pi r bracket h plus r. अब आप ये याद करो नहीं करो ना, you should must have logic. हाँ, lateral surface area 2 pi r into h, that page ना, then plus two circles हो जाएगा ना. I didn't need to like remember. मैंने कभी remember किया ही नहीं actually. For me maths में कोई formula उतना होता ही नहीं, ठीक है ना. You will connect it later. Okay, आप जैसे से बढ़ोगे. Now come to the cone. My point, है ना. Come to the cone. Adit, you have not started, right? Na, Adit. Adit, you are here. Yes, sir. आपने अभी ये चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है ना. Be frank. Yes, sir. हाँ, आपने अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है ना. No, sir. ठीक है, ठीक है. सो थोड़ा सा ना आदित्य ना, ये जो लॉजिक अभी बोलेंगे ना,
फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, ये जो फॉर्मूलाज यहाँ लिख रहे हैं ना, ये कल हम डिस्कस किए थे, ठीक है, तो रिकॉर्डेड Yes, सेशन sir. में वहां है, इसको जरूर देखिएगा। नाउ अभी इसको हम कैसे कौन से रिलेट करेंगे वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम Yes, नहीं। sir. अभी आपका ये पॉइंट होगा कि एटलीस्ट अगर हमको ये फॉर्मूला पता है, जो कि आपको सामने तो एटलीस्ट दिख रहा है ना, इसको हम कौन से कैसे Yes, sir. कनेक्ट करने वाले वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट वॉल्यूम का, तो मैंने बात कर लिया है। इफ आई टॉक अबाउट वॉल्यूम ऑफ कोन, इट विल बी द 1/3 द वॉल्यूम ऑफ Cylinder. 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 So Adit, see, what is the formula of cylinder of volume? Pi r square into h. Adit, Yes, sir. on your camera. Yes, I sir. know कि आपको नहीं समझ में आया, मैं उसी तरह समझाऊंगा, ठीक है ना। So Yes, sir. 1/3 बस इसको दिमाग में रखना कि वॉल्यूम अगर ऑफ कोन पूछता है ना, तो क्या करेंगे, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। व्हाट वाज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? ठीक है, पाई r स्क्वायर h। ओके, इसका लॉजिक कल हम क्लियर किए, लास्ट 2 सेशन से ये क्लियर कर रहे हैं। सो वहां ये चीज क्लियर हो जाएगा। बट आपको ये चीज रिलेट हो रहा है ना, आप कभी भी यू शुड नॉट लाइक, है ना, इसको आप रिमेंबर नहीं, आपको माइंड में रखना है कि इट इज 1/3 ऑफ सिलेंडर। लाइक यू कैन ड्रॉ एन सिलेंडर, और सिलेंडर का अगर आप आप ये पोर्शन अगर कट आउट करके निकाल लोगे, दिस पोर्शन, इफ यू कट आउट दिस पोर्शन, दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एक्चुअली कोन। कोन ना, कोन दिस शेप, your topi, birthday topi, right? Birthday Yes, topi sir. it is, right? Cone, right? So इसका वॉल्यूम क्या होगा? See this volume, ये जो वॉल्यूम है ना ऑफ सिलेंडर, this is 1/3 of the whole cylinder volume. So 1/3 of pi r square h. Now coming to the next point, which is more important here. So all of you, is this formula for volume of cylinder is okay? Pi r square h. 1/3 Yes, of. sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. But in a cone, na, but in a cone, here we have a radius, है ना, ये radius होगा bottom में, एक circle है ना bottom में, radius है, right? This one is height, this one is height, and you see, for example, this one is O, this one is A, this one is B. This OB is what? ये भी height ही है, but it is like somewhat flat. This one is height, ये एकदम से stick है ना, एकदम ऐसे. But if this one is like, this is what? Something Slant height. slant. तिरछा, Slant you can see तिरछा, slant है ऐसे, इस तरह से. So that OB will be called slant height, SLANT, slant height. And slant height is represented by L. L, small L. Okay. So now all of you can see in this figure, we can see a right angle triangle right now. This one is height, this one is L, and this one is radius, right? So can we apply which formula? Pythagoras theorem. N square equal to H square plus R square, right now? Exactly. So come to the point, volume of a cone is 1/3 of the cylinder, that is 1/3 of pi r square h. And now, Excuse me, sir. tell me, Sharanpreet. So why is it always 1/3 of volume of cylinder? So actually, scientifically we found that when we see this figure, okay, and divide into 3 equal halves. Sharanpreet, when I will divide this whole volume into 3 parts, okay, so I found that it Yes, was sir. actually 1/3 of pi r square h. Okay. And moreover, like there is Okay. actually proof also, right? If you want to prove now, we can prove it. ये अभी नहीं, but these are preordinance. ये बहुत higher level differentiation और ये सब use करके है, ठीक है? But experiment और बच्चे लेवल पे कैसे करते हैं? It is very simple. बच्चों को क्या बताया जाता है? Whatever this volume is ना, इस volume का 1/3 अगर आप निकालोगे ना, you will see this as a shape of cone. So directly we tell that कि हाँ क्या होता है? This one, okay? 1/3 sir. of. Now next point, can anyone tell me lateral surface area? Lateral surface area होता क्या है? Anyone can tell? Pi RL.
pi r l. Pi r l. Why pi r l only? Sir, we will consider the bottom circle. I don't know exact. Exactly that we have to discuss. Now I'm going to relate. Thus, we do not consider the bottom and top. Bottom we will not considering lateral surface area, right? Now coming to, I'm explaining, okay? See this one, which I'm trying to do, okay? So all of you, you have a, for suppose you have a circle, right? This circle is made of rubber. ठीक है? क्या किसका बना है ये? Rubber. Rubber. Okay? And for suppose ना इसके middle का meet point ना आपने पकड़ के ना इसको ऊपर करना है. What I'm trying to say? For suppose it is a rubber, so what will happen? This will form? Cone. Yes. It is, sir. all of you first understand what I'm trying to say. This one is for suppose rubber. Okay. So this area is what? This area which you can see is pi into R square. pi r square. I'm R asking, sir, square. I'm asking R this area square. only. Okay. This is pi r square. Okay. This is pi r square. Now this one is of rubber, right? And if I will pick this point, इसको पकड़ के ना ऊपर करेंगे, what will happen? Same टोपी बनेगा ना? This will become in this shape. Yes, sir. Yes, Getting my Yes. point? All of you are understanding this point ना? So earlier, what was happening? Area है ना? So area में क्या है? Pi into r square is r into r, right? So now if I will pick this, इस point को ना पकड़ के ऊपर कर दिया. For suppose this one is O. अब इसको पकड़ के ऊपर कर दिया. This thing will get created ना? Rubber का है तो expand होगा, right? Rubber can Yes. expand, right? Yes, sir. All of you understanding this thing? Yes. sir. ठीक है? Yes, Now Yes, come Ye- to the point. Yes, sir. Yes, now sir. come, so exactly what will happen? See, area is वही है, area सब कुछ वही है ना, pi square था. यहाँ भी ये देखो, यही surface ना अभी create होकर के ये lateral surface area बन गया है. Adit, lateral surface area is what? जो actually round हो कुछ ऐसा. Like you can see ना ये, this thing which I'm like touching Adit. ठीक है ना? You can see this one is something round, right? Curve. This is called like lateral surface area. Okay, Adit? So, Yes, sir. so this one is lateral surface area, but the bottom one, if there is some like, if I'm show you a cylinder, okay. So this surface is flat. Yes, flat है. ये भी circle flat surface है. But ये जो surface है ना Adit, this one, ठीक है? This one is round, right? So this is considered है, इसको बोलते हैं lateral surface area. ठीक है? So now जब सर, ये circle, हाँ बोलिए. बीच वाला है सर, मतलब ये. हाँ, round, this round shape. Yes, sir. Okay, this surface is actually lateral surface area, which I'm trying to say 2 pi r. Okay, so now I'm taking a circle which is totally a flat surface. It has pi into r. But now when I am picking this one and इसको ऊपर कर रहे हैं, this new surface which I was telling क्या है ये slant height L, right? L is getting created. So similarly, you will do what now? This pi r square has become now pi. Earlier it was pi into r na. Now what is happening? R is always here. R is as a dimension is here. But now a new, in place of this R, you will write L. Because this L is getting created. So the lateral surface area of the cone, you will remember, circle is pi r square na. I have picked this point, ऊपर कर दिए थे. And in place of pi into R, one R will get replaced by this new L. So the curved surface area of the cone is pi r L. Logic समझ में आया? If you know the formula of Yes. circle Yes, pi r square na, you know the formula of curved surface area of cone. I'm very clear. आप एग्जाम Yes, में sir. बैठे हो, Yes, sir. ठीक है? And you know आप प्रेशर में होते हो, ठीक है? और आप उस समय याद करो क्या था, कोई पुर्जा लेकर के आए हैं क्या, कुछ फॉर्मूला कहीं लिखा है क्या, माइंड नहीं वर्क करेगा. बट यू विल, आपके दिमाग में ये है ना कि एक सर्कल था, प्रकाश सर बोले थे एक सर्कल है, सर्कल एरिया यू नो pi r square, राइट ना, pi into r एंड आई एम पिकिंग सम, उसको पकड़ के ऊपर करे, दिस वन इज 3D फोटो, सो आई एम पिकिंग द मिडिल पॉइंट, उसको ऊपर करे, क्या है दैट सर वाज टेलिंग ना, सिंपल इट इज वेरी व्हाट that one R will get, क्योंकि इसको ऊपर करने से नया L क्रिएट कर रहा है, राइट? R is always there, so one
R will become in the form of L, and that is the formula of fine, na? My Yes, point is sir. very clear, na? My point is very clear. Yes, sir. Okay. So curved surface area of cone is pi RL. you understand the RL. law. You understand the logic क्यों है? Yes, Okay? sir. Now you will not never forget, Hana, for the lifetime, right? Now come to the next point. One is now pi RL. Now what will happen in your exam question? It will be written that there is a topi birthday. For suppose someone has birthday, my birthday like is there. Okay, and I am like wearing this cap. My point is like I have to find this curved surface area, or I can say lateral surface area. Okay. Now I want to understand कि इसका lateral surface area क्या होगा? Pi RL I know, but in your question na L is not given. Height is given, right? Height is given, not the slant height. Radius is given and not the L is given. So you can apply that formula. What was I? Yes, sir. Pythagoras theorem. Yes, sir. So all of R you, square plus H square. exactly. So all of you take out your copy and just let me answer in 30 seconds. This one is a cone. This height H. This height R. This is R. R value is 3. H value is 4. What is the curved surface area of this cone? Time. Fast. Curved surface area of this cone. 15 pi, sir. 15 pi, sir. I'm hearing Naveen. I'm thinking actually सभी कितना सोच रहे हैं, कितना difficult question है. 15 pi, sir. Okay. H is given, R is given, pi RL, है ना? Pi RL is the curved surface area. Done. 15 pi. All of Yes. you सब खाना खाए है ना? ऐसा नहीं ना? Yes, sir. Abhishek, you are here. तिवारी जी. बहुत बड़ी पढ़ाई नहीं है क्लास 10th. आप लोग इतना लोड लेते हैं ना? ठीक है, pi RL है ना? Pi, you know pi को pi छोड़ो आप. R you know R is 3. What is the value of L? Pythagoras theorem you know na? This one is 4, this one is 5. So you can calculate it is 5. So 5. 15 pi. Easy peasy burger cheesy only. Why you think so? इतना सोचना ही नहीं है. Adit, it is okay na? Yes, sir. Now if I will ask the total surface area of cone, now you will think what sir ने बताया था, curved surface area तो pi RL होता है, plus total surface area में ना Adit, this bottom surface will also get counted. It is total, right? So आप ये जो टोपी का portion है ना, round portion, right? That portion is pi RL, and plus this circle you can see in the bottom is pi R square. So Pi R square. so simple, total surface area you pi RL plus pi R square. That is what? Pi R L plus R. It is okay? Yes, sir. अभी now when you start है ना studying, आप इसको रटने अगर बैठ रहे हो ना, है ना, total surface area of the cone is है ना pi R bracket L plus R. What was the logic? कुछ नहीं समझ में आने आया. ठीक है ना? मे बी आप कितना भी रेटिफिकेशन हो, मैथ्स में रेटिफिकेशन नहीं चलता है. You must know the logic. Curved surface area is pi R L plus there is bottom a circle pi R square. Take out common pi R. Happen. आप इसको याद रखो, इसको याद करने के पीछे नहीं भागो. I am very clear ना? मेरा इंटेंशन क्लियर है? Yes. फाइन ना, माय इंटेंशन इज कि आप रेक्टिफिकेशन पे नहीं जाना, ठीक है ना? एंड वन थिंग अभी कैलकुलेशन पे भी आएंगे, ठीक है ना? देन you know, I am telling you very frankly, when I was in class 9th, I was not able to solve mensuration any question because of type of questions. I know 6a square सबसे हो जाता है, right? Cube wide. But when I come to calculation, ना calculation हमसे भी नहीं हो रहा, ठीक है? मैं भी कोई but when good teachers come, ना they told you कि कैसे करना है. That I'm trying to convince. Okay. So now, so you should remember this one. Okay. Next point. We have done in the cone, right? We have done with the cone. So let us revise. Total surface area of the cone is. RL plus pi R. IR bracket L plus R. Again bracket you are telling.
रिमूव दैट ब्रैकेट ना, अब ब्रैकेट नहीं सोचो. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, आप इसको नहीं समझे. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, डू लाइक दैट ना, कि lateral surface area is pi r l plus bottom Pi surface RL will be plus pi r pi square. R square. now जो कॉमन निकालना है ना, pi r bracket l plus r और r. చాలా బాగుంటది అని అర్థం. Chitra, there is like mute yourself, background sound it is. Now come to the next point. We have understood the volume, we have curved surface area, laterals, all is done, right? Now what is the Yes, next sir. topic? We have done this cone and we have done with cylinder, right? So now all of you ready for a question? All of you ready for a question? We have a cylinder, this one is cylinder. Okay, all of you take out your copy. है ना, ऐसे बैठे हैं ना वो मूवी, right? Bahubali 3, it is not going, right? So take out your copy. This one is this thing. Okay, this one is a, for suppose some toys it is, and this bottom surface is cylinder and this part is cone. Okay, now this one is r radius, this one is the h height. Okay, and one more thing, this height, for suppose if I can say this L, okay? So what it is given, L value is 5, R value is 3, height value is 7. Let me know the total surface area of this toy. Total surface area of this. See, I know ये question easy होगा बहुत बच्चों के लिए, but actually I want to see आप कर कैसे रहे हो, ठीक है ना? Because when you move the same pattern ना to big question, तब आप calculation में stuck करोगे. So start. How you do actually वो हमें देखना है, ठीक है? All of you can on your camera. ठीक है, अभी सबका copy देखेंगे. Total surface area, total surface Sir, area. 84 pi, sir. 84 pi. Take your time, all of you. Don't like किसी ने आंसर बोल दिया मेरे से क्यों नहीं हो रहा है. Be relaxed, okay? Take your time. All of have efficiency. So Naveen, show me your copy. How exactly you have done? How exactly you are solving? Okay. Your steps are very less. Naveen, can you just send me a picture on WhatsApp? Yes, sir, 84 pi. Send me the photo. Actually, send me that photo. Yes, sir, thank you. Athirat, you are here. I'm explaining also. 24 pi Devanshi, Ashna. Okay, so should I start? Sir, sent you on what? Sir, I sent it, sir. Sir, I also sent. Okay. Kamran, I'm telling code. Okay, code के पीछे नहीं भागो, है ना? यहाँ class के पीछे, है ना? So now we should start, right? So Adit, see, Adit on your camera. हम समझा Yes, लेंगे sir. आपको. हाँ. See, if I touch this toy के किस surface को हम touch कर सकते हैं? We can touch this portion. ये touch जो something टोपी, right? This portion, right? Curved surface area. नहीं समझे? You know, like curved surface area इसका कौन सा है?
this is like that na, this structure which I'm trying to say, ये structure, Yes, sir. this one which is like है ना ऐसे curved surface area. What is the formula of this curved surface area of this cone? Pi RL. Pi r l. Okay, plus आप ये बॉटम में यहाँ पे सर्कल है क्या? दिस सर्कल जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, क्या ये है या नहीं है? Yes, sir. है सर. No, sir. No, ये तो sir. समझना है. देखो बच्चा, ये सिलेंडर जो है ना, ये दिस इज अ डिफरेंट शेप, राइट? और ये कोन होता तो कोन का बॉटम सरफेस होता, राइट? बट ये कोन एंड सिलेंडर इज गेटिंग ज्वाइंट एट सम प्लेस, राइट ना? सो अगर ये Yes, होल yes. बॉडी है, सो जब इसको स्टक करेंगे तो यहाँ ये जो सरफेस है अब ये खत्म हो गया. अर्लियर जब ये सेपरेट था, यू कैन टच दिस बॉटम, राइट? अ सर्कल व्हेन इट वाज सेपरेट, आप इस सरफेस को टच कर सकते थे. जब व्हेन दिस टू सरफेस गेट स्टक, आप उसको टच भी नहीं कर पाओगे. बात समझ रहे हैं? Yes, sir. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट. ये जो कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का, राइट? दिस इज 2 पाई r into h. 2 पाई r. इसका लॉजिक आदित्य कल हम डिस्कस किए, ठीक है? इसको देखना है. प्लस दिस इज इन द बॉटम ना, ये बॉटम इसको टच कर सकते हैं टॉय को? थोड़ा सा प्रॉब्लम. Yes. दिस बॉटम सर्कल इज Yes. पाई r Higher square. पाई r स्क्वायर. ओके, हाँ, हो रहा है तो सर. आप बोलिए आदित्य. हो रहा है सर. टच हो रहा है सर इसको सर. ठीक है, bottom में. ठीक है. सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमको सेपरेटली, यू नो, सब में पाई है ना, राइट? सब में ऑल हैव पाई, राइट? एंड मोर ओवर दिस रेडियस, जस्ट नीड टू क्लीन इट. सो दिस वन रेडियस इज 3. हियर आल्सो रेडियस इज 3 ना, ये रेडियस 3 होगा फॉर दिस कोन. Yes, sir. And now see this triangle, you can see na, this radius is 3, this L is 5, so हम ये height of cone भी निकाल सकते हैं if it is required. ऐसा required तो है नहीं, because we need L only, right? So what I'm trying to say, you will do what? At every step we don't have to calculate, right? So pi r L plus 2 pi r h plus pi r square. Okay, and then what is the common thing? Pi is common everywhere. Then radius is common everywhere, right? See, this radius is also 3, this radius is also 3, right? So I will take r as common from all. Then what will common? L plus 2 pi. Oh, no, pi has gone outside. Write the code of today. All of you write the code of today. TOPI, T-O-P-I, cone, है ना? Fine. What is the common? Pi r is common, na? Pi r is common here. Pi r is common from here. So now 2 h is here also. H is also here. Plus pi r has gone. 1 r is left, right? So what I'm trying to do na, calculation minimize करना है. At every step ना, श्रुति हम calculation नहीं करेंगे. I will not go to solve this one right now. ठीक है ना? मैं लिखूंगा that हाँ this plus this है ना, step wise मैं लिखूंगा, but I will not solve this. इसको सॉल्व नहीं करेंगे. वो मैक्सिमम होगा तो आई विल राइट कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन इज व्हाट? पाई इंटू आर इज 3 इंटू एल इज 5. वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे. अभी इजी क्वेश्चन इसलिए आप वैल्यूज पुट भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट व्हेन यू कम टू डिफिकल्ट क्वेश्चन ना, अभी हम बॉटम से अभी हेमिस्फीयर और सब करना जब स्टार्ट करेंगे, व्हाट यू विल ट्राई टू डू ना, आप सॉल्व नहीं करेंगे, आप वैल्यूज पुट करके छोड़ेंगे. कॉमन आउट आता है, कॉमन आउट निकालिए. अब यहाँ लास्ट टाइम आ गया कि हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे. दैट पाई वैल्यू इज 22/7, रेडियस इज 3 into L value is 5 plus 2 into height is what? H is what? I have given H or not? What was the value of height? So Height is 7. Height is 7 plus what is the radius? Radius is 3. Now I will calculate only. And the last. Okay. So fine. So guys, अभी इसको ना थोड़ा 2-3 difficult questions को लेकर के connect करेंगे. We have sphere and like hemisphere, right? ये थोड़ा left है, so we will work on that. Okay, so all of you start solving. जहाँ calculation stuck होता है ना, tell me. अगर आप calculation में stuck कर रहे हैं, take that photo, send me. हम आपको बताएंगे उसमें correction कैसे करना है, आपके steps में correction करना होगा. ठीक है? Fine guys. Okay, sessions join. Today we have like bio class, right? Reduction. Yes, sir.
Fine guys, है ना? We have only one session. And from tomorrow test will be in the second class. We are starting test now. So आपका अब sessions धीरे धीरे less होगा, test थोड़ा increase करेगा, ठीक है? Fine guys, है ना? Join yourself. Bye. Okay, sir. Thank you, sir. Welcome. Thank you. Welcome. Bye Naveen. Bye Ritvik. Bye Shruti. Bye Samriddhi. Sir. Bye Abhika. Bye Humaira. Hello Naveen. Sir, sir, I Topi, think my TOPI, answer is Topi, wrong, sir. Topi. Topi, Sir, TOPI. Okay, sir. Sir, I Thank you, sir. actually used the cylinder site as 10 instead of 7, sir. So it's answer is 66 pi only, sir. That okay, it's fine Naveen, but you are understanding the logic, समझ में आ रहा है ना कि Yes, क्यों sir. ऐसे? Yes, sir. That I is- actually miswrote it, sir. yeah, Instead of 7, I wrote 10, sir. That's only. okay, okay Bye, Naveen. sir. Bye Thank you, Ashna. sir. Welcome. Bye Lavanya.